Hi future birds, welcome back to my channel. So in this video I'm going to tell what is going to be my January 2025's routine and plan for NEET preparation. Here I have made on December plan itself, and that actually kind of don't work for me because I was having some syllabus left at that time when I made that plan that I'm going to give full syllabus mock test every Sunday. But because I had some syllabus, and that a little part of syllabus, took a whole month to get completed because I was having a whole organic chemistry pending for the syllabus. So it took whole December to complete me organic chemistry along with some physics chapters which were pending as I told in the earlier video. So these all took my whole December. So now I'm going to implement a new plan for mock test in January and February, but in this video I'm going to show for January itself. So actually you can't properly see. This is what my mock test schedule looks like. This is my January plan. This is a board which is telling me that time is running. You have to do everything quicker, everything faster because the NEET is coming in 130 days. I'll show you everything in detail, but firstly I just explain you everything just to give an overview of it. So it's my mock test dates. I'm given 14 mock tests. I repeat, 14 part mock test from January to February itself. And in this I have a January routine which is starting from morning to night. Not like this कि 4 to 5 ये करना है, 6 to 8 ये करना है, not like this. It's just a structure that how must I go to make my month fully productive. Obviously we can't be fully productive on every day, but I think this structured routine can help me to become more and more productive itself. Actually I'm not seeing in the camera because the mobile is tilted now, so I'm seeing that part of video, so don't get offended. Actually I can't make eye contact with the camera. Okay, anyways, these sticky notes are actually necessary for my preparation. These sticky notes carry that data that I can't remember. How much I revise, I can't remember. For example, the conversion units, I can't remember. In the Selenium unit of life, we have that 70s equals to 50 plus 30. This is easy to remember, but I can't remember which subunit forms which type of RNA. For example, 50s forms 23 sRNA and 5 sRNA. Still, I can't remember it. So I have written these kind of data on sticky notes so that I'll be revising all this data every day. So that till all these 130 days, I will revise it 130 times. So I'll be obviously retrieving all the data at the time of my exam. And obviously this is all my stationery stuff. So what is going to be my plan? Let me tell you clearly by the back camera because it's a selfie camera. So you're actually seeing everything laterally inverted. So I'm recording this video on 27 December. So today are exact 130 days left in NEET. That is what I've written on this board. It's deletable, so I'll change it every day so that I can remind every time that time is going. If you are wasting your time, come back on the track. And this is going to be my January 2025 routine. Hope it's visible. So actually I've written, let me read it all the stuff. First is to wake up early, probably at 3 or 4. Then I have face wash plus yoga and meditation. Yes, I've added these two things in my routine. For the first time in 18 years, I'm going to start this. So I don't know how it's going to work for me. I've found some yoga, YouTube channels for yoga and meditation itself. So let's see if this works and if this helps in our preparation. So I'm going to build this habit. So next we have start with the most difficult subject, obviously चाहे वो organic हो या physics हो. I'm gonna, क्योंकि योगा और मेडिटेशन के बाद कहते हैं कि फोकस पावर इंक्रीज हो जाता है, सो दैट आई पुट ओसी एंड फिजिक्स इन दिस स्लॉट. नाउ यहाँ पे कुछ भी ऐसे मेंशन नहीं है कितने घंटे पढ़ना है बिकॉज हर दिन का मूड अलग अलग होता है. किसी दिन पढ़ने बैठो फिजिक्स 10 मिनट भी नहीं पढ़ी जाती. किसी टाइम होता है कि फिजिक्स 4 घंटे भी पढ़ लो. सो दैट्स व्हाई डोंट हैव रिटन एनी टाइम. बस इतना है कि स्टार्ट करना है मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट से, चाहे 10 मिनट पढ़ूँ बट वो 10 मिनट भी इतने फोकस के साथ हो कि जो मेरा टॉपिक बहुत समय से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ कि मुझे नहीं करना वो हो जाए. दैट्स वाई. उसके बाद आई हैव लाइक
विदाउट ब्रेक बस उसको करते रहना. उसके बाद आप थोड़ा मतलब आई हैव रिटन दैट हैव सम टी एंड गो फॉर सम इजी सब्जेक्ट टू बैलेंस द mind equilibrium. So I'm going to go for like bio, yeah, basically any type of theoretical subject that is supposed to be easy. Next, I'll go to library. Yes, I have put library in this schedule also because I think changing to environments can help to basically what we can say stay away from burnout, right? Because बंदा एक इन्वायरमेंट में थक जाता है कि टेबल पे बैठे बैठे, तो मैं सुबह अपने टेबल पे पढ़ूंगी, बीच में लाइब्रेरी, शाम को फिर टेबल पे या बेड पे. सो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट वाइब ऑफ स्टडिंग, राइट? देन वी हैव study slot in library, that is going to be question practice slot, whole question practice slot. Then we have will come at home basically. Then we have a long break. इसमें मैंने एक न्यू हैबिट स्टार्ट की, दैट राइटिंग अ डायरी. ओनली पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज जब मैंने पहले डायरी लिखना स्टार्ट किया था, आई यूज टू राइट एवरी नेगेटिव थिंग हैपन विद मी एक्सेप्ट any positive thing. So this time I have changed it. So I'm gonna write a diary which is going to contain all the positive things happened with me on that day. So that is going to be coming after the library. So next we have, if I'm making a vlog, वैसे तो मैंने सोचा कि आई विल मेक अ व्लॉग रेगुलरली टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. सो इन दिस लॉन्ग ब्रेक ओनली, लाइब्रेरी के बाद 1 घंटा ब्रेक का चाहिए यार. शाम के 5 बजे लाइब्रेरी बंद होती है, तो 5 से 6 घंटे मुझे भी चाहिए यार इतना पढ़ने के बाद. तो उसमें अपना बंदा व्लॉग एडिट कर सकता है अगर उसने बनाया, तो वो चीज़ है मेरे लिए. देन स्टार्ट विद इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट, जिसमें सिर्फ लेक्चर्स, क्योंकि मैंने पूरा दिन सेल्फ स्टडी किया है. नाउ आई एम गोइंग टू फोकस पर्टिकुलरली ऑन लेक्चर्स, क्योंकि अभी भी मेरा कुछ टॉपिक बाकी है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रे ऑप्टिक्स लेफ्ट, वेव ऑप्टिक्स लेफ्ट एंड बायोमोलिक्यूल्स का हाफ पार्ट पड़ा है केमिस्ट्री का. सो कुछ माइनर टॉपिक्स बचे हैं, जैसे सरफेस टेंशन एक टॉपिक है, टॉपिक बचे हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम लेक्चर्स रेगुलरली. एंड आफ्टर दैट आई हैव एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू मेक श्योर माई सिलेक्शन इन नीट इज स्टिकी नोट्स रिवाइज करने हैं और पीरियोडिक टेबल रिवाइज करना है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को. थर्सडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे आई एम गोइंग टू रिवाइज SP sheets. What are SP sheets? I'm going to make a separate video on that, so you can watch that. SP sheets and SN of every chapter. And SN means short notes of कोई भी चैप्टर जो let's say मेरा टेस्ट में आने वाला है. मैं आपको भी बताऊंगी पढ़ना क्या है मैंने, वो भी बताऊंगी. So this is going to be my structured routine. Now talking about this which is my mock test dates, which is actually made like this, scheduled like this, that I'm going to give 14 part syllabus test till 25 Feb, starting from 30th December. So this is actually not hectic because I have done my syllabus. I have to just revise, practice, give test, revise, practice, give test, and these are part syllabus tests. So anyways, talking, okay, so थोड़ा नीचे करना था. Okay, anyways अभी बात करूँ मैं, हाँ, मॉक टेस्ट के बारे में. नीट प्रेप टेस्ट सीरीज आपको पता होगा, नीट प्रेप के ऊपर एक वाइटल टेस्ट सीरीज है, उसके टेस्ट मैं देने वाली हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर रहेगा मेरा प्लान कि जो मैंने टेस्ट रखा है, टेस्ट के बाद नेक्स्ट टेस्ट में जो भी डेज होंगे, लेट्स से मेरा 30 को फर्स्ट टेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 27 को मुझे ये खत्म करना, 28 को ये, 29 को ये, ताकि मैं 30 को टेस्ट दे सकूं. तो वो वहाँ पे छोटा सा प्लान रहेगा. तो पढ़ूंगी मैं यही चैप्टर्स जो मेरे टेस्ट में आ रहे हैं. अब मेरा सिलेबस खत्म है, मुझे सिर्फ रिवाइज प्रैक्टिस करनी है. एंड दिस इज गोइंग टू बी होल प्लान फॉर जनवरी. फेब्रवरी के लिए शायद मैं कुछ चेंजेस कर दूं. I am not sure about it because nobody knows the future. So this is going to be my plan. I hope you like the plan. आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना. आपको फिजिबल लगा या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. So that's it for today's video. Love you guys.